Welcome everyone. Welcome everyone. Good morning all. Good morning. Good morning. Vijay. Good morning. Yes. God bless you. So, welcome to Odisha Civils. Regarding geography optionals, as we have discussed previously, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି model theories and ସେଇଟା discuss କରିବା regarding today we'll go for this Weber's model, that is Weber industrial theory. This is one of the most favored questions in geography optionals ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ paper 1 ରେ excuse me. So paper 1 is it more a favored question. So so am I clear to everyone? Let me know. Okay. So kahinki Weber model ta ete important, because aji bhi jodi hame discuss kariba. Okay, thank you. अभी जब हम डिस्कस करें वेबर मॉडल ऊपर, वेबर मॉडल relevancy the many countries like discussion करी, like many big companies, they are also in favor of this. I mean, you are following the your Weber model. जब मैं कहूँ कि the General Motors, right? General Motors जब देखियो, General Motors is basically, it's a renowned US company. We know General Motors is a renowned US company, and he follows this Weber model pattern. In fact, जदि हमें देखिबा कि मुंबई, पुणे, Hyderabad, they are also the even if the Okhla industrial town in New Delhi, also they follow the principles of this Weber principles. So still the relevance is there. We'll discuss further. तो प्रथमे जानिबा कि Weber किए, and this is a part of your human geography, right? Excuse me, one. And this is a part of your human geography. Human geography part re ase, right? He is the person, Alfred Weber is the person who is the man who behind this total concept. Alfred Weber, right? Alfred Weber hame dekhile, is the man behind this your the concept. He was developed jodi dekhibo ki in the 19th century, 1800 till 19th century. He was much with the prevailing situation in Europe, खास करी जब हम देखिबा Germany and UK, he was, this concept is basically developed, and the relevance is today much applied. Though continent wise जब हम देखिबा कि Europe is much different in the climatic conditions and the topography with the Asia, or खास करी जब India ऊपर कहबी, but still it has got relevancy because of the same type of pattern. Means, I mean, the parameters what he considered. Let us know se कौन parameter consider करथिले Weber, and basing on that how it is much relevant in today's world. Weber कथा देखिबा, Weber model is खास करी कि क्वेश्चन जो पचारंती प्रथमे एटा बुझिबा कि कोन रिक्वायरमेंट, खास करी जदि हम देखिबा कि क्वेश्चन जो पचारंती Weber model basically industries ऊपर, right? Basically Weber model is basically मन रखो क्वेश्चन जदि पचारिबो तुमको, Weber model is basically your industries ऊपर, right? Industries ऊपर Weber model टा is basically. Other than that आउ अलगा किसी जिंस रे Weber तापर तांकर पैरामीटर देखिबा, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज गोटे लोकेट करिया पे कोन कोन दरकार, हम जदि जे जानिबा इंडस्ट्री लोकेट करिया पे तीनटा मेजर जिंस दरकार, राइट? गोटे हला तमरो रॉ मटेरियल, आ गोटे हला लेबर, आ गोटे हला ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हला रॉ मटेरियल, लेबर आ ट्रांसपोर्ट, ई तीनटा हला मेजर फैक्टर. हमें जानछन कोन कोन कि इंडस्ट्रीज बनिया पे थ्री पैरामीटर्स इंडस्ट्री पे, रॉ मटेरियल हला प्रथमे, रॉ मटेरियल, देन लेबर out industries, right? Sorry, raw material, labor, and transport cost, transportation, है transportation. ये तीनटा जिनसा हमर दरकार इंग्रेडिएंट. तो ये जिनसा भी वेबर भी जिनसा को डील करथिले, राइट? वेबर भी जिनसा को डील करथिले. लेट अस नो अल्फ्रेड वेबर के विषय ते जानिबा. अल्फ्रेड वेबर 1868 to 1958, है ना? तांगे देखिबा 1868 to 1958 formulated the theory of industrial locations को से मेन देथिले, right? In which an industry is located where it can minimize its cost. Major हमर कोन थाए मोटिव,
कि इंडस्ट्री मिनिमाइज इट कॉस्ट है मिनिमाइज इट कॉस्ट एंड देयरफॉर मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट नॉर्मली जने से जो से वेबर भी गोटे वर्ड यूज करथिले दैट इज योर इकोनॉमिक मेन राइट वेबर यूज द वर्ड इकोनॉमिक मेन ए वर्ड टा भी वेबर यूज करथिले हला वेबर यूज दिस वर्ड इकोनॉमिक मेन रो मेजर तार एजेंडा कोन रे मेजर कि जदि देखिबो कि तार मेजर एजेंडा रहबो कि हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इकोनॉमिक मेन रो मेजर कोन रहबो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट राइट मैक्सिमाइज प्रॉफिट तमे निजे भी भाबो कि तमे जदि गोटे बिजनेसमैन हो इफ यू ओपन एंड बिजनेस सपोज लेट्स से एन शॉप गोटे शॉप खोललो साइड रे हला साइड बिजनेस देन ऑब्वियसली तमरो रहइबो कि नाही मु मोर प्रॉफिट ता अधिक करी सो दैट इज व्हाट द वेबर कंसीडर दिस इकोनॉमिक मैन लिखिला बेले ई सब पॉइंट गुडा बेसी माने खाता रे माने हाईलाइट करिवो कि इकोनॉमिक मैन तांगर मेजर कांसेप्ट then Weber for industrial model is known as your least cost theory, right? It is known as your least cost theory, right? Weber industrial model is also known as your least cost theory, right? Accounted for the location of a manufacturing plant. Basically, it a manufacturing plant upare mane mane majorly तांकर focus से ऊपर और it is driven over the manufacturing plant काहे कि से समय यूरोप रे 19 से जदि हम देखबो 19th सेंचुरी से समय इंडस्ट्रीज गुडा बहुत माने वेल पेस्ड नोथला हैला इंडस्ट्रीज गुडा in terms of the owner's desire to three categories of cost basically कौन था one is your transportation cost जोटा हम लिखले transportation labor and agglomeration बहुत बढ़िया जिनसटा वेबर मॉडल डायग्राम रे बुझी क्लास रे आहुरी डिटेल रे जिनसटा हमरो बुझ हवे इंक्लूडिंग फॉलोइंग द नोट्स एंड इन फैक्ट वी आर सिंस the offlines onlines both are running offline for the UPSC and online for the OPSC right so वर्तमान as of now the status also the GS batch is there से जिनस ऊपर आहुरी मु कहबी but concept गुडा बुझियोटा बहुत बड़ जिनस मु सबले ए always suggest the students to be more focused in the class so that तमे जले बुझुचो आहुरी बहुत जिनस करियो हैला आहुरी बहुत जिनस तमरो माने तमरो स्कोर एनहांस हो बिकॉज़ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन इन द योर एग्जाम पेपर सो एग्लोमरेशन कोन एग्लोमरेशन माने इज योर डिफरेंट एक्टिविटीज एट ए टुगेदर कोन लिखली डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट कोन रहइबो ठीक अछि सॉरी डिफरेंट एक्टिविटीज for a product for a final product हला एग्लोमरेशन तक को जाय जेमति गोटे कंप्यूटर बनौछ और असेंबलिंग तक को जाय जेमति गोटे तमरो सीपीयू बनौछ कि गोटे कंप्यूटर बनौछ कंप्यूटर में कोन दरकार तमरो सॉफ्टवेयर भी दरकार हार्डवेयर भी दरकार पार्ट्स दरकार तापरे सेमीकंडक्टर दरकार वायर्स दरकार कैपेसिटर दरकार सो दैट इज कॉल्ड एग्लोमरेशन सो गोटे इंडस्ट्री वेबर से जिंस हाईलाइट करथला आज भी जदि तमे देखिवो if you go to Singapore, if you go to Macau, Hong Kong, this concept is very much relevant applicable there. जानिबा आगु केमति चलो see these are the places where we can see एठी के आसिया पूर्वरु ए तीनटा मैप पूर्व म आगु गोटे जिंस प्रथमे एठी देखिए दी वेबर कर तीनटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट आई विल बैक टू दिस those slides again वेबर कौन कहले वेबर एटा कहले कि लेबर ट्रांसपोर्ट एंड एग्लोमरेशन फैक्टर these are the most important of the Weber model हैला लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन लेबर कथा भी कहले ट्रांसपोर्टेशन कथा भी कहले आ एग्लोमरेशन फैक्टर कथा कहले समस्त एना क्लियरली बुझ पड़तो सर ये तो पता चल रहा है हम लोग को लेबर क्या है और ट्रांसपोर्टेशन ओके ये समझ में आता है लेकिन एग्लोमरेशन क्या है एग्लोमरेशन जिंस जोटा मु तुम कहली कि टू फॉर रीच ए फाइनल प्रोडक्ट जेमति गोटे कंप्यूटर तुम तैयारी करछ कंप्यूटर तैयारी करिया पे कोन दरकार बुझ भला तापरे मु उल्टा गले तुम सीधा जानि परियो हैला एपट बुझी तो तबे धर कंप्यूटर तमे बनौछ कंप्यूटर बनया पे तमर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट दरकार right or let's say if I am going for an iron and steel industry ପାଇଁ कोन दरकार suppose iron steel industry रे जदी तमे बनौछ various गोटे iron प्रोडक्ट बनौछ हैला let's say गोटे कार automotive car you are making an product suppose let's say
है आयरन स्टील मु एग्जांपल देली कि लेट्स से ऑटोमोबाइल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल शॉप कौन लेट्स से मु कहली कि फोर व्हीलर कार गोटे कार नेली फोर व्हीलर लेट्स से मु आई विल गो फॉर द BMW राइट आई विल गो फॉर द BMW कार बनया पे बहुत सारा पार्ट्स दरकार तार इंजन पार्ट्स दरकार देन तार फ्यूल टैंक दरकार देन चेचिस दरकार देन योर अलॉय व्हील दरकार सब दरकार तार गोटे जगह केमती रहइबो सब तो डिफरेंट डिफरेंट जगह सो सेही जगह कोन कहले एग्लोमरेशन माने गोटे जगह रे से तमे तीनटा जंकर इंडस्ट्री से कोन कहले एटा मागु कहबे कि ए जगह दिस इज द योर प्लेस वेयर द मार्केट शुड बी प्लेस देयर जोटा कि वेबर को प्रथम जिंसटा सेटा कहति हला आगु देखिबा एटी देखो वेबर को मतरे देयर दैट शुड बी योर यू नो द जदि हम देखिबा कि यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पई कोन हो एटी कोन देखुछो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल देन 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आ एटा हला एम हला मार्केट ठीक अछि एम हला मार्केट तो एटी कोन रखला तमे जदि हम देखिबा एटी राइट पीटा जो एटी देखुछो तमे लीस्ट कॉस्ट लोकेशन एटी देखो ता माने प्रथमटा एटी तमे देखो बुलो ए डायग्राम को मु कहितले बैक आसीबा हम ए डायग्राम जदि देखिबा कि R1 R2 आर द रॉ मटेरियल्स P is the least cost location माने देखो suppose you are a businessman right so businessman कौन होबो is a economic man businessman मन रखो businessman is a economic man and economic man always thinks rationally how to maximize profit with minimum invest very simple तो एठी से कौन करियो कि एई जगह रे से देखला कि रॉ मटेरियल एठी मोर गोटे प्रोडक्ट बनिया पे एठी तो से जुगता से मार्केट ता एठी मार्केट पाखरे अरे जो प्रोडक्ट बने कौन करियो then he has to sell so that is why he has to least cost he has to settle the plant here that means एठी गोटे raw material मिलुची एठी गोटे raw material मिलुची एठी हला तोर industry this is the market m for your market right this is your market and this is your least cost काहे कि again is an industrialist again an industrialist is an economic man right industrialist is an economic man है economic man ठीक अछि this is the major motto बुझो वाला then same जिंस जदी same diagram को मैं आसु this is also this is your market again least cost एठी देखो काहे कि एठी देखो ऊपर अछि बट एठी के तळको आसला मे बी एठी पुणी आमे आपरा गोटे थ्योरी आसबो वेट लूजिंग एंड वेट गेनिंग इंडस्ट्री जस्ट वेट लूजिंग एंड वेट गेनिंग तमे एठी कोन देखुछो एठी नियर टू रॉ मटेरियल हैला एठी नियर टू रॉ मटेरियल बट ए ऊपरटा देखो इट इज नियर टू मार्केट तब जदि देखिवो प्रथमटा ए सेकंड रे कोन आसी एठी पळे आसी माने रॉ मटेरियल पाखु एठी मार्केट आगु पाखु पळेछि पुण जदि एठी देखिवो आ गोटे फिगर रे अगेन it is very near to market industry एठी मु कोन कहली industry this is your market भला बे बुझो मु 1 by 1 करी बुझोछि दीटा एटा गोटे फिगर नोछि आ गोटे फिगर को आउरी क्लोजली नोछि हला माने मार्केट संगे की क्लोज और रॉ मटेरियल पाखे तो एठी हम कोन देखिले दिस इज एटा हला प्रथम सिंपल कि मार्केट लीस्ट कॉस्ट माने इंडस्ट्रियल लोकेशन है दिस इज द इंडस्ट्री लोकेशन परीक्षा लिखला बेले तमे मन रखो सब ना explicit way रे बुझेबो you have to make them understand in a very explicit way so that it is you are helping the examiner to understand better बहुत पिला कोन करंती they write exam hall रे जो लिखंती they write for their own actually सेटा हुएनी तमे examiner को सब बळे प्लीज करिया करो तो एठी हम कोन देखिबा कि इंडस्ट्री रो लोकेशन तमे एठी देखुछो P और दिस इज रॉ मटेरियल बट एठी देखुछो इंडस्ट्री दूर रे अछि माने मार्केट टू दूर रे अछि बट ए जगह कोन अछि रॉ मटेरियल हला रॉ मटेरियल these are the places बट एठी देखुछो रॉ मटेरियल ता इंडस्ट्री इज हियर नियर टू द मार्केट एठी कोन देखुछो इंडस्ट्री गोट जगह दीटा धरुछि सेकंड और थर्ड टाकू सेकंड थर्ड स्लाइड टाकू इंडस्ट्री इज नियर टू रॉ मटेरियल सोर्स near to raw material source right not for the market this is your market but dita case bujhebi eti kon dekhucho industry is near to industry dita case le industry is near to market
ता माने कोन आछि वेट लूजिंग एंड वेट गेनिंग बुझी होछि समस्त को वेट लूजिंग एंड वेट गेनिंग तो एठी हम कोन देखिबा मार्केट पाखकु जे रहिला ठीक अछि एई जगहटा ओके एठी कोन रहिला मार्केट पाखकु नियर टू द मार्केट राइट नियर टू द मार्केट माने एठी कोन रहइबो वेट गेनिंग ए इंडस्ट्री गुडा हम पछुर जाउछि दिस इज योर वेट गेनिंग रे कोन रहइबो एठी वेट गेनिंग इंडस्ट्री का कहवा को कहवा वेट गेनिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल कॉटन मेकिंग और क्लॉथ मेकिंग वेट गेनिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल्स इट्स ए कॉटन क्लॉथ्स ठीक अछि कॉटन क्लॉथ्स फॉर एग्जांपल देल परीक्षा देला बळे एमति होय कॉटन बाय नेचर इट इज वेरी लाइट बट आफ्टर स्पिनिंग इन थ्रेड ताको स्पिन करी माने थ्रेड जेतला हुए देन इट मेक्स टू द क्लॉथ्स एंड क्लॉथ्स गेन्स वेट इट कोन कहली कॉटन by nature is light है but after spinning into threads है making threads and then clothes जेतले बना कोन हबो वेट बढ़िला वेट गेन कला वेट गेन सो तान माने कोन रहइबो वेट ता गेन हला सो वेट गेन जदी हला माने कॉटन केते हल्का तुड़ा माने फुंकी दबो पवन उड़ी जीवो बट तमे तले ताको स्पिनिंग करके थ्रेड बनौछ तमर क्लोथ्स होची क्लोथ्स हला पर इट गेटिंग वेट सो से जिनसरा से कहले कि वेट गेनिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर टू द मार्केट ए केस रे सेकंड एटी मु देली केस एटी देला सेकंड केस ता फर्स्ट केस हमर डी कोन रहला एटी देखो दिस इज एटी देखुछ नियर टू द रॉ मटेरियल इंडस्ट्री इज नियर टू द रॉ मटेरियल मार्केट बहुत दूर रे अछि एटी कोन देखिला मार्केट पाखरे इंडस्ट्री एटा हला रॉ मटेरियल दूर सो एटी कोन कहले से एटी वेट लूजिंग इंडस्ट्री हाउ कम वेट लूजिंग इंडस्ट्री केमते रहइबो हला वेट गेनिंग आउ वेट लूजिंग इंडस्ट्री राइट थोड़ा अगेन मुनेली आयरन कौन रहइबो टू मेक आयरन हला आयरन एज ए आयरन मेटल suppose for example I took it as an iron metal iron no suppose gote tame metal bane iron how it is possible iron metal baniya pe you need hela to it nearly to make 1 ton right 1 ton okay 1 ton iron there is a need of 4 ton iron ore मन रखो आयरन बनिया पे मेटल बनिया पे ठीक अछि टू मेक 1 ton 0.1 ton मोटे लिखली 0.1 ton आयरन मेटल हला आयरन मेटल में लिखली आयरन मेटल में यू नीड 4 ton आयरन ओर प्लस 2 ton coal right plus 2 ton your coal so जदि एटी प्लेसमेंट होची पाखरे रॉ मेटल पाखरे देन इट इज वेरी इजियर अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल सेव सब केस रे मन रखो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टाको से बंचाव चेष्टा करछन तमे निजे भाव जदि मार्केट एटी थांता सपोज एई जगह इंडस्ट्री धर एटी है थांता एठू एटी की जिबा पे केते खर्च होई थांता सेम एठू एटी जिबा पे सपोज एटी रहला मु एटी लिखली एटा कोल आ एटा हला आयरन ओर हला आयरन रो तो ओर हबो ना ठीक अछि डायरेक्ट तो हबनी ना हेमाट सपोज मु कहले हेमाटाइट आयरन ओर हेमाटाइट जो आयरन त मिलिबो हला आयरन ओर रु तापर कोन हो प्रोसेसिंग हो अगेन प्रोसेसिंग जदि करिवो ताले ट्रांसपोर्ट केते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आइडी खर्च होइतांदा ट्रांसपोर्ट ठीक अछि ट्रांसपोर्ट मु लिखली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हायर से जो सेठी कोन कले पाखरे रखिले हला प्लेसमेंट दैट इज अवे फ्रॉम द मार्केट बट नियर टू द रॉ मटेरियल बिकॉज़ ऑफ these are the weight losing industries and weight losing पे तमर ती बनिया पे you need this one right 1 ton तो एटी weight losing काहे के कहला अगेन 4 ton and 2 ton एटा मिसी केते हला 6 ton हला बट 6 ton हमको दरकार कोन हमको दरकार 1 ton तो weight losing हला कॉटन धर मु कहली दैट इज लेट्स से सपोज 10 ग्राम हार्डली 10 ग्राम रु तमे बनौछ 100 kg of clothes that is what weight gaining एटा हला राइट
बुझिहेला आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट सो दैट इज व्हाट हम कोन जानले एटी कहछन वेट गेनिंग एंड वेट लूजिंग वेट गेनिंग रे हमें देखिले कि कॉटन इंडस्ट्रीज एंड वेट लूजिंग योर आयरन मेटल और आयरन इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री राइट सो नेक्स्ट वेबर जदि हमें देखिबा कि से इंडस्ट्री रो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को सब प्रायोरिटी देना इट शुड बी योर क्लोज टू योर मार्केट सेंटर नेक्स्ट जदि देखिबा भी वेबर आल्सो टॉक्ड अबाउट द आइसोडापेन राइट वेबर आल्सो टॉक अबाउट द आइसोडापेन आइसोडापेन पडिया बुझे पर एग्लोमरेशन इफेक्ट कोन एटी बुझो एग्लोमरेशन इफेक्ट रे सेडी देखै जंदी कि दिस आर द ए पार्ट तक म लास्ट को आस ए स्लाइड बिफोर दैट वन let me understand here isodapane weber also talk about the isodapane is a concept okay these lines it dekho these blue colors are your raw material a blue color these are the lines raw materials and this is the market right so ethre isodapane re khali diagram ure मन रख isodapane is the line joining the total transportation cost kon कहली isodapane is the line right line joining the total transportation cost right line joining the total transportation cost but it hala kon these are the isoteams these lines are the isoteams right these are the lines of isoteams right isoteams then what is isoteams hala isodapane isoteams these are the lines hala line joining this is the line joining the transportation cost of commodity or item एटा ब्लू कलर हैला सो एटा हम कोन जानले कि आइसोडापेन रो माने रहियाला कि एमिति तो मे मटेरियल टा गोटे जगह इंडस्ट्री प्लेस करो हैला क्रिटिकल आइसोडापेन अछि पुनी क्रिटिकल आइसोडापेन अछि industries should be located in that place where the transportation cost and labor cost has to be minimum सबुठ बड़ जिंस मन रख ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट ए जगह कोन रहउछ आइसोडापेन टॉक्स अबाउट द देखियो it talks about the minimum least cost the minimum labor cost प्रथमे labor cost and transportation cost मु आप तुमको एग्जांपल देबी आउरी बहुत सारा हैला minimum labor cost and transportation cost who be gote economic man or let's say one industrialist he is major focusing on these two parameters and that is why a Weber model is mainly governed or regulated by the least cost approach or least cost theory very simple mu to bhabe ki geography bhaliya scoring optional bode कोठी भी नहीं in fact the students जो score near around 400 plus in fact more भी UPSC जब मैं कहबी कि once upon a time दो UPSC I have near score about 300 जदि हम देखिबा 390 पाखा पाखी पेपर 1 रे 200 plus पेपर 2 रे 190 पाखा पाखी माने 400 क्लोज 390 रु 400 भीतर थिला सो तमे जदि डायग्राम करी कि बुझी देलो नो नीड टू मग अप घुसिया किछि दरकार नै हला वेरी सिंपल तमे निजे सबोले मन रख निजर सांगरे माने एग्जांपल दे कि तमे मन रखियो इट विल वेरी इजियर अच्छा वर्तमान एटी मु कहबी कोन this is agglomeration effect this is basically your Weber talks about the critical isodapane right critical isodapane re kon hochi what do you understand the critical isodapane this is the agglomeration of industries right agglomeration of industries talk about that in industry suppose I'll talk about the Mercedes or Volvo right Volvo in Germany right so एमाने कोन करिवे ताके इंडस्ट्री सेठी बनेबे जोठी से माने कोन पाइले सपोज एठी मु कहली कि गोटे कार मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से कार मैन्युफैक्चरिंग समस्त को भल लागे सपोज लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द BMW राइट BMW और Mercedes से माने कोन रहले BMW लेट्स से तो एठी से रहले कोन रहला कार रो बॉडी पार्ट हैला कार रो बॉडी पार्ट हैला कार रो बॉडी पार्ट रहला एठी कोन रहला your this your internal circuits
circuits, your diodes, है capacitors, एटी रहिला right car body part. this is एटी रहिला तमर कोन. the next जदी देखिवो your brass है alloys. एटी मेन में लिख दोची कि your alloys parts बहुत सारा तमे देखिवो है कि गोटे मैन्युफैक्चर जेतलो हुए चेचिस में बहुत सारा alloys दरकार हुए. alloys माने जे मिक्सचर ऑफ सेट में सेग्रीगेट कोन कले कार बॉडी पार्ट गोटे अलगा होला, alloys पार्ट अलगा होला, आ गोटे तमर सेमीकंडक्टर कंडक्टर एटा को अलगा मु कले हैला कैपेसिटर और लेट्स से सेमीकंडक्टर्स. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स हैला सब पार्ट. तो यार मिक्सचर ता नै कि से माने गोटे जगह रे बसले इंडस्ट्री बने. एंड दिस इज लेट्स से BMW, राइट. BMW योर manufacturing center or industries. For example मुना देबी General Motors. इटी गोटे एग्जांपल देले जेंति मु कहली वर्तमान how it is relevant to the today's world. हैला मैंने कोन लिखली how Weber model is relevant, how it is relevant today. relevant Weber model हैला Weber's model relevant in today's world, how it is. or question chala, this is a question, right. तो आंसर एटा हला मो एग्जांपल देली जनरल मोटर हला. जनरल मोटर इज एन यूएस कंपनी, राइट. जनरल मोटर establishes its industry in Vietnam. कोठी in Vietnam. Now the question is that why in Vietnam? कहीं की Vietnam रे? Now the question is that why in Vietnam? Why General Motor choose Vietnam as a country? US कोठी, Vietnam कोठी. Southeast Asia, North America. Asia or North America. Why they choose? Because of the cheap labor. हैला answer is that जदि हम देखिबा because of the cheap labor. हैला because of the your cheap labor. हैला cheap labor पे. इंडिया रे जदि मु देखिबी एटा हला जनरल मोटर एग्जांपल दे. जत्ते बळे तुम एग्जांपल लिखुछ परीक्षा रे मन रख दीटा जिंस जणे 20 रु 18 19 पाए आ जणे 7 8 पाए. the difference is that 10 12 marks. my goodness, how जणे जदि रखुची 200 250 धर वर्तमान जो पेपर रे एबे भी रछत पिला 170 रखुछ. बिलीव मी. एंड एबे भी अछन पिला 70 भी रखुछ. 100 marks or difference, how? Right. So these are the things we cannot make fool to the examiner that writing anything absurd and we are claiming that one no मैंने तो लिखा था और वो मुझे मार्क नहीं दिया. how come it's possible like saying this one? it is better to accept own fault. जेंति मु कहबी वर्तमान एग्जांपल पुणी अथरे देबा कि एटा जेन जनरल मोटर एग्जांपल देली जेंति मु देली वर्तमान इंडिया रा सपोज नेली बोकारो स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, okay, and the steel plants, Tata steel plant, Bokaro is an RSP Raurkela जेमति मु कहली कि your cell Raurkela steel plant जेमति अछि देखो Bokaro Raurkela. just look at here when in context to the relevance Weber model, right. Weber model your relevance to Indian industries, right. to Indian industries. let's say if I'm making a map here, right, केमती map करियो, you are making a map here, right. let's say, right, suppose it meanly this is your Bokaro, this is your Raurkela, this is your Vilai. it kon leli Bokaro steel plant, this is Raurkela, and this is your Vilai. and एठी नेला तमे विशाखापट्टनम, right, Vizag. this is your Vizag. so जदि एठी जदि मु कंसीडर करूची ए पार्ट रे, this is, see, let's say one is your Bokaro and Vilai and Raurkela. these are the see it looks as if like an in a triangle, they are in the triangle, right. so जदि त आमी देखिबा आजि का डेट रे भी जदि देखिबो relevance, for example if I say the Raurkela steel plant, Bokaro steel plant, they took the iron ore from Nuamundi is a plant, Joda, Bodville, Nuamundi. these are the places. ए जो place रे अछि, you know, these places are your जेमति कहली कि your Nuamundi, right, Nuamundi,
जोड़ा बड़बिल है जोड़ा बड़बिल एटी भिलाई एपटे छत्तीसगढ़ आसला बाइलादलिया आयरन ओर सबु जगार दिस आर द आयरन ओर माइंस एटी लिखली दिस आर द आयरन ओर माइंस राइट आउ बाइलादलिया इन छत्तीसगढ़ previously it was in Madhya Pradesh बाइलादलिया then again if we go to the coal and water also coal ପାଇଁ ଏଠି କଣ ଅଛି ଯଦି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେବି coal ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରେ coals ଅଛି right and in fact तालचेर रे coals अछि जदि तमे देखियो राउरकेला रे कोठी सुंदरगढ़ रे तमे देखियो MCL हैला you are basically Ib river is the richest महानदी coal field limited जोटी सेठी coal पाउछ and river जदि देखियो is Brahmani is there so typically जदि तमे देखियो Vilai Bokaro and Raurkela steel plant they are you're basically on the Weber model pattern right so that is what this is the relevance in today's India's au purbo example ta mu deli your Vietnam re deli that is how the General Motors in US company how because of the cheap labor right they put their industry in in Vietnam so seti loko rozgar bi paile tame eta likhi paribo ki people get job or they are getting the engagement for the livelihood right so that is what the relevance of Weber model खाली जेतले पिला मैक्सिमम कोन कोन घोषी पकांती खाली डायग्राम बडा कर दियन तुम आगे बुझो तार रिक्वायरमेंट कोन काहे केटा हेची वेबर ए जिंसडा आजि कहि जाते 200 वर्ष तळे पाखा पाखी हे जिवो हला 150 वर्ष ऊपर को हेगलान आजि का 150 200 वर्ष भीतर आजि भी ताको रिसर्च करा है कि ताको आगो नि होछु व्हाई इट इज बिकॉज़ हाउ फार इट इज you know very much pragmatic to the today's world that is what the General Motors like company BMW and like the you know the giant Maharatna's companies Navaratna companies like your Steel Authority of India Limited that they are making the plants steel plants it will be Steel Authority of India Limited they are making the steel plants which is basically based on your based on your Weber model एठी एटा कोन पई कला ए पाखरे because to save এটা রাখা হলা to save the transportation cost हला to save again transportation cost so हमें conclude करछि कोन कि Weber model तीनटा जिंस से देखिले Weber so three factors हला three important factors में लिखले three important factors for Weber कोन रहिले one is your labor then your raw material how transport cost and transportation these are the तीनटा important factor जोटा कि Weber को पाए हला मीन बता right this is the basics understanding in the Weber model right okay एमती टाइप रो अनाउंसमेंट करिवे हला एमती क्लास रे भी हमरो रही ए टाइप रो डिस्कशन जदी मु देखे बाहुरी हला एई गोटे ए जिछरा मु ऑलरेडी पिन कर देबी हला जो पीडीएफ टा राइट कोन देखले agglomeration refers to the location of many farms and industry to each other and economically favored like your large cities near ports near railway junction हला large cities जो you know railway junctions हो कि ports हो सब जगह रे जिछटा तमरो माने it's applicable there right the agglomeration are the like growth poles कौन से economic center ए जिनसटा भी ऐड करियो तमे it is just like an growth poles right it's like an growth poles and there are many benefits and externalities of locating farm factory and industrial agglomeration जेमति आउटी पूर्वरु मु कहली growth pole center हला General Motor जदि भाबी चिंती काम करूछ it is also an welfare people will get the job opportunities in Vietnam right एठी जितले ट्राइबल एरिया जितले इंडिया जदि एई जगह देखुछ राउरकेला माने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड दिस इज एन महारत्ना राइट दिस इज एन नवरत्ना right this is your Navaratna companies Navaratna your group so ethi kon hobo lots of tribal people they'll get the job there in fact the not only the tribal pockets there are also the tribal people are basically innocent right if you go to the other youths in these areas they'll also get in fact India's foreign direct investment FDI also increased by seeing the resources here so that is what the major सबले मन रखो गवर्नमेंट रो मेजर मोटो थाए welfare activities every through any of the means right so एटी हम देखले कि growth pole center कोठी रहे जेम देखलो कि near ports railways large cities agglomeration सही जगह को growth pole रे
and there are many benefits externalities of the locating farm factory in industrial agglomeration, right? The cost of labor, raw material, technology, transport is low industrial agglomeration. Therefore, your margin of profit is greater. Margin of profit is greater. So this is what आज आम जान कि इंडस्ट्रियल थ्योरी उपरे वेबर तो ये बड़े एक्सप्लेनेशंस आहुरी डिटेल रे दिस आर द ओनली थिंग्स आई डायग्रामेटिक वे रे जिनसडा बुझाला बट क्लास रिव्यू स्टडी विल गेट मोर योर conceptual clarity. This is the only by your YouTube I can access to the many students those who are located in the remote located, and in fact the students they get to know the theme कि केमती एटा करा होची. But major जदि देखा हबो ओके क्लास रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब जदि एक्टिविटीज तो टोटल ऊपर इट इज नॉट पॉसिबल ओके बट सेति में कोन हिची कि ऑलरेडी द बैच हैज स्टार्टेड राइट द बैच हैज स्टार्टेड ज्योग्राफी ऑप्शनल्स रो and GS also we have started geography optionals ro online we have already started the geography optional and the batch has started more than since last month okay 1 month already and anyone can access so dekhibo you can access to me over the phone this one 797 8090972 you can access to me all the numbers has given here right you can access to me UPSC offline batches has already there online optionals already started from more than a month right these are my toppers those who score more than 350 and 400 okay these are the toppers right they're also ranked 10 16 right and these are successful candidates I'm saying right so again those who are जो भी interest अच्छी जहाँ भी you can access to me है ना आउ GS batch रो जब देखिए कि दिस आर द GS batch already is also started with GS batch करछि because मु भाबे कि GS is too huge 2000 तो देखिए more than near about 2000 mark 2000 man को tackle करबा tricks दरकार right so real bites comes when you know जब खुद बैठोगे तो सही समय हमको जाना पड़ेगा कि नहीं trueness टा कौन so that is what truth is always prevails okay so thank you so much thank you everyone right thank you everyone we'll again we'll again meet right again we'll meet on this one in the coming sessions rahul thare puni dekha and we'll come with the different models our discussion khali ei optional jemti rahila questions ma author karemi question answer so anyone can access you can go for the given number right this number you can contact to me right whatsapp achi jaha bhi achi you can contact to me for your general studies paper and your geography optionals right thank you so much thank you everyone thank you so much thank you so much thank you have a good day take care bye bye thank you so much anything to ask let me know okay thank you so much thank you everyone thank you